दोस्तों एक ऑनेस्ट क्वेश्चन। अगर आपके पोर्टफोलियो में ये लिखा है टाइटैनिक सर्वाइवल प्रिडिक्शन यूजिंग लॉजिस्टिक रिग्रेशन एंड एक्यूरेसी 82%, रिक्रूटर क्या सोचते हैं? वो सोचेंगे नेक्स्ट। व्हाई? बिकॉज 50,000 प्लस स्टूडेंट्स हैव डन द सेम प्रोजेक्ट। एक्यूरेसी इंप्रेस नहीं करती है, थिंकिंग इंप्रेस करती है। 2026 में हायरिंग पैटर्न बदल चुका है। कंपनीज पूछ रही है कैन यू थिंक, कैन यू यूज एआई स्मार्टली, कैन यू कनेक्ट डेटा टू बिजनेस इम्पैक्ट। आज मैं आपको एग्जैक्ट फ्रेमवर्क दूंगा। व्हाट डज नॉट वर्क, व्हाट वर्क्स, हाउ टू स्ट्रेच योर पोर्टफोलियो, 5 प्रोजेक्ट आइडियाज दैट एक्चुअली इंप्रेस। कॉमन पोर्टफोलियो मिस्टेक 2026 प्रोजेक्ट जो 2026 में इंप्रेस नहीं करते। टाइटैनिक सर्वाइवल प्रिडिक्शन बिकॉज लिटरली एवरीवन हैज डन दिस। हाउस प्राइस प्रिडिक्शन आउटडेटेड है, ओवरयूज्ड। आइरिस फ्लावर क्लासिफिकेशन ML बेसिक्स है इसमें एंड नो बिजनेस कॉन्टेक्स्ट। कैगल टाइटल बेल्ट चेजिंग विदाउट एक्सप्लेनेशन। आई रैंक टॉप 15% मीन्स nothing without context. Dashboard without a business question. I made charts is not impressive. Copy paste tutorial projects. Recruiter can tell what actually missing in most portfolios. Business context like why did you do this analysis? Your thinking process. How did you approach the problem? Actual insights like what did you find that was not obvious? Recommendation like what should the business do with this? AI acknowledgement. Did you use AI tools? How? What did you verify? Portfolio shows your work. A great portfolio shows your thinking. What work in 2026? 2026 portfolio formula. First, problem. Next, your approach. Next, your AI assist execution. Next, what would you found? Next, business recommendation. Because quality over quantity. 2026 advice 2 to 3 deeply done project greater than 10 swallow one project that shows genuine thinking greater than 10 copy paste project. AI honest approach, this is your differentiator. Most students hide that they used AI. Do the opposite. Write in your readme, I used Claude to generate initial SQL queries which I then validate, modify for business context and extend with domain specific logics. Here what I change and why. This shows AI fluency plus critical thinking plus honesty plus domain knowledge. Recruiter in 2026 want people who use AI smartly, not people who pretend they don't. Documentation matter more than code. GitHub README को seriously treat करो. Include executive summary, business problem, data set description and your methodology. Key findings, business recommendation, limitation, what would you do with more time. A non-technical person reading your readme should understand what you did and why it matter. 5 project ideas that actually impress in 2026. Project 1, domain specific business problem, must have. Choose your domain, find a real problem that companies in that face domain. एग्जाम्पल टेलीकॉम कंपनी में कस्टमर चर्न कैसे प्रिडिक्ट करें और विच कस्टमर को रिटेन करने पर फोकस करें. डेटा सेट केगल टेलीकॉम absolutely free. What makes it impressive? Not just prediction, but who are retained, why, and what intervention would cost versus benefit. Project 2, AI assist analysis. Use AI tools to help with analysis. Document how you use them, what you find verified, what you changed. Example, used Claude to suggest initial analysis approach for the sales dataset. Then verify the SQL queries were correct and add domain specific business context about seasonal patterns in India retail. This project explicitly demonstrates the skill companies want to most in 2026. Project 3 is your city state data. Uniqueness factor. Government data portals have state level data. Nobody else has done your exact project. Example, Maharashtra road accident data analysis. Identify high risk zones and recommendation infrastructure improvements. Or UP MSME employment data. Which districts have highest growth potential? Originally equal to memorable हो जाएगा आपका, equal to better recall when hiring decision is made. Project 4 is cross function analysis. Combine two data sources to find non-obvious insights. Example, social media statement
और आपका ई कॉमर्स सेल्स डेटा does negative Twitter sentiment actually predict sales decline next week. This shows data combination skills plus business hypothesis thinking plus correlation analysis. Project 5 is process automation, like agentic thinking. So you understand automation. Example, I built a Python script that automatically pulls daily sales data, run basic checks, and send a formatted WhatsApp email summary. No manual work needed. This shows automation mindset plus Python plus practice business thinking. GitHub and LinkedIn portfolio strategy. GitHub हर प्रोजेक्ट के लिए सेपरेट रिपोजिटरी, रेडमी फाइल मैंडेटरी, the one I described above. Code comments in English. Recruiters review code. Dataset source always mention. अपना प्रोफाइल रेडमी बनाओ. अबाउट मी स्किल्स प्रोजेक्ट एंड समरी. लिंक्डइन एज पोर्टफोलियो. अबाउट सेक्शन में टॉप 2 प्रोजेक्ट्स मेंशन करो. हर प्रोजेक्ट कंप्लीट होने पर लिंक्डइन पर पोस्ट करो. पोस्ट फॉर्मेट. प्रॉब्लम देन अप्रोच देन फाइंड देन व्हाट आई लर्न. टैग कंपनीज इन योर डोमेन. लोग डरते हैं पोस्ट करने से, यही आपका एडवांटेज है. मोस्ट स्टूडेंट डोंट शेयर देयर वर्क पब्लिकली. The ones who do get noticed. आज से शुरू करने का प्लान. वीक 1 चूज 1 प्रोजेक्ट आइडिया फ्रॉम अबव और योर ओन. वीक 2 and 3 do the project, use AI document how. Week 4 is write the readme business problem first and code last. Week 5 GitHub upload plus LinkedIn post. Repeat for 2 more projects. Remember, one honest, well documented domain specific project is greater than 5 tutorial replications. कमेंट में बताओ आपको कौन सा प्रोजेक्ट आइडिया चूज करोगे, मैं आपको फीडबैक दूंगा. अगला एपिसोड डेटा साइंस में कम्युनिकेशन मोड, व्हाट नो एआई कैन टेक फ्रॉम यू.